Thereafter, you will witness the most awaited event for this evening, the देखेगा जब ये है हमारा वचन। तैयार रहिए इस पल के लिए जब भारत होगा इतिहास गूंजेगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Ladies and gentlemen, we are presenting the cockpit view from the Chetak helicopters through this approaching the grandstand, led by Commander Kaustubh Deshmukh, Commanding Officer IAS 321. रेडियो सज्जनों, आपके सामने से गुजर रहा है तीन भव्य चेतक हेलीकॉप्टर ग्रैंडस्टैंड की ओर, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कौस्तुभ देशमुख। Coming from your left, the formation is led by Captain Saurabh Srivastava, Commanding Officer IAS 324. వానపకల నిర్మాణంలో వస్తున్న స్వదేశీయంగా నిర్మించబడ్డ రెండు Ladies and gentlemen, this is the cockpit view of the Seeking helicopters, which are now right in front of the dais. You can see right from the pilot's eyes and see how the world feels from up. The Seeking formation संचालन किया है बैक साइड इनका मोड़ में अधिकारी INS मोड़ में इनका कमांडर युवराज कुमार ने। Now bearing in front of us is a Kamor 28 helicopter piloted by Commander Priyadarshi Paritosh, Commanding Officer INS 333. Coming up, ladies and gentlemen, look at the cockpit view from the Kamor helicopters flying right in front of you. हेलीकॉप्टर जिनका संचालन फ्लाइट कैप्टन वेंकटेश कमांडर INS में सर्वाधिक उन्नत हेलीकॉप्टर से एक MS-60R का Firing flares, the MS-60R are displaying their advanced suit. ये हेलीकॉप्टर फ्लैश फायर कर अपनी उन्नत सेल्फ प्रोटेक्शन सूट की क्षमता प्रदर्शित करके आपके सामने से गुजरे अभी and performing the bombers maneuver firing flares. Bombers maneuvers fighter aviation in tradition as they approach in an arrowhead formation to perform a bombers maneuver. The formation is led by Captain. खूब प्रदर्शन देवियों सचलों जोरदार प्रोत्साहन करें उनका। Ladies and gentlemen, up next we have the amphibious demonstration. Amphibious operations are among the most complex missions in modern warfare, seamlessly integrating naval and land combat power. Today you are witnessing a demonstration infantry. आधुनिक युद्ध कला में एम्फीबियस ऑपरेशंस अभियानों में से एक माने जाते हैं, जहां नौसैनिक और थल शक्ति का सटीक समन्वय होता है। आज आपके समक्ष है 16वीं बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BM। What you have just witnessed is a brilliant display of coordination, mobility and firepower by the mechanized infantry. Let us give a huge round of applause for these exceptional warriors and their formidable BMP machines. आपने अभी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की समन्वित युद्ध क्षमता, गति और मारक शक्ति का शानदार प्रदर्शन देखा। इन वीर सैनिकों और उनकी शक्ति। Now we can see a formation of 3 Dornier patrol aircraft in diamond formation, led by Commander Abhinav Handa, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 311. మూడు డోనియర్ పెట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లను వజ్రాకృతిలో మనం చూడవచ్చు। 4 डोनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट डायमंड फॉर्मेशन में निकले हैं। इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 311 के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अभिनव हांडा ने किया। हमारे सामने से निकल रहे हैं कोस्ट गार्ड डोनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिनका नेतृत्व 7th कोस्ट स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी AR कलनल कर रहे हैं। These versatile maritime patrol and reconnaissance aircraft are fast and reliable. They monitor coastal water. Commanding Officer IAS 312. Firing flares. Give it up for the PHI.
फ्लेयर्स फायर करते हुए आपके सामने से निकल रहा है हमारा भव्य थिएटर जिसका उड़ान भर रहे हैं INS 312 के कमान अधिकारी कैप्टन హలో You will shortly see three divers from Chetak using బయలుదేరు ఎక్కడికి వస్తాను descend into water to rescue the people in distress. చెప్పండి భయ్యా అయ్యా ఉప్పు చేసి ఉదయం చేయమన్నాను देख रहे हैं जो भारतीय नौसेना के विभिन्न हेलीकॉप्टर की बचाव क्षमता को दर्शाता है అయ్యో ఆల్రెడీ వచ్చామండి ఆల్రెడీ వచ్చేసాం క్లాస్లో వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే నాకు మాట్లాడలేదండి నేను ఉదయం చేయమన్నాను ఉదయం మార్నింగ్ చేయమని కాల్ చేయమనంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ అయ్యో ఉదయం చేస్తే నేను ఏదో చెప్తే మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయింది స్టార్ట్ కూడా అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏం కష్టమే మేము వెళ్ళిపోయాం కదా పాస్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం మాట్లాడటానికి కూడా అవును ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు అయ్యా ఏమనుకోకండి అసలు మార్నింగ్ చేయాల్సింది अभी आपने देखा एयरप्लेन रेस्क्यू फैक्टर के द्वारा किस तरह निकासी की गई वायु स्टेटस डबल Ladies and gentlemen, right ahead we see a coordinated multi-halo special operation. One seeking 42 Charlie helicopter would insert Marine commandos. देवियों और सज्जनों आपके ठीक सामने हम एक समन्वित मल्टी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन देख रहे हैं एक Straight गा में हेलीकॉप्टर मरीन कमांडो को एक नौ straight गा लगा। के लिए उतारेंगे जिसका नेतृत्व किया जा रहा है Multi-halo special operation. నా లొకేషన్ పెడతాను అక్కడికి వచ్చి ఆ రూట్ ఎలా చూపిస్తాను వచ్చి వ్యూ చూడరా Please look behind you. On the big screen behind you. You can see the Marco slithering down. Please stand alive. Slithering is a rapid way to deploy marine commandos where helicopters cannot land. హెలికాప్టర్లు ఎగలేని చోట మరీన్ కమాండోలను చేర్చడానికి స్లిథరింగ్ ఒక వేగవంతమైన మార్గం. देवियों और सज्जनों अभी आपने स्थितिक तकनीक से मरीन कमांडोज को जमीन करते हुए देखा This disposal team of clearance divers led by Lieutenant Ronak Pai and Vijay, Master Chief Petty Officer. देवियों सज्जनों आगे की ओर देखें यह सटीक विस्फोट क्लियरेंस डाइवर्स की एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम द्वारा किया गया है जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट रोनिक पाई और विजय मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर CD1 कर रहे हैं And
now, look at the Marcos fly away with ease, still hooked onto the helicopter, showcasing a daring display of courage and precision. Helicopter ఆడితో High degree of skill. Our trained pilots do this with style and grace to provide the మదాలతాం మంజుల వాగ్విలాసాం మాధురీరద్యుతి కోమలాంగీ మాతంగ కన్యా to watch the smart and fit men and women marching to the tunes of military band is a privilege. The marching can वास्तविक गौरव का क्षण है। अब मार्चिंग टुकड़ियों का आगमन होने वाला है, जिसकी अगुवाई करेंगे परेड कमांडर प्रमोद भी ध्यान देंगे। कमांडर प्रमोद marching to the tunes of Jai Bharati, led by Lieutenant Pawan Kumar Gandhi. कंधे से कंधा मिलाकर सभी कदमों के साथ नौसेना के जोशीले जय भारत की धुन पर मार्च करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे यह 24 सैनिक उसी कंटिजेंट का हिस्सा थे। 19 वर्ष 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देश को गौरवान्वित Anywhere, anyhow. क्षितिज पर दमकती रोशनियों में सजे युद्ध पोतों की आकृतियां ये संदेश दे रही है कि हमारे युद्ध को शक्ति सदा समुद्रों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करके रहेगी। Convey that our warships will always protect
flag. पूरी समुद्री परंपरा वाले वियतनाम से आए ये नौसेना दल गर्व और संकल्प के साथ ग्रैंड स्टैंड के सामने से गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व सीनियर लेफ्टिनेंट डैव कर रहे हैं। led by Sub-Lieutenant Mohammed. They are marching. Shanno Varuna, may the Lord of the seas be auspicious unto us. We invoke Varuna, the deity of the seas, to bless us all here at the city of destiny. समुद्र के अधिपति वरुण हम पर कृपा बनाए रखें। हम यहाँ सिटी ऑफ डेस्टिनी में समुद्र के देवता वरुण से सभी के कल्याण और आशीर्वाद की कामना करते हैं। Join us as we take you on a voyage through time and tradition, from the ancient docks of the Indus Valley to the deck of the modern aircraft carrier. Hear the roar of the engines and the whisper of the waves as we honor our sentinels of the seas. Behold the glorious saga of the Indian Navy. हमारे साथ इस समय ज्वार और परंपरा की इस यात्रा पर चलिए। सिंधु घाटी के प्राचीन बंदरगाहों से लेकर आधुनिक विमान भवनों के विशाल डेक, इंजनों की गर्जना और लहरों की सरसराहट के बीच हम समुद्र के प्रहरी को नमन करते हैं। साक्षी बनिए भारतीय नौसेना की गौरवशाली यात्रा। India, the only country in the world to have an ocean named after her, possesses a centrally located in the Indian Ocean. India's long coastline and many islands have shaped the flow of Indian thought and culture to various parts of the world. भारत विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर है। 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी एक समृद्ध समुद्री विरासत का स्वामी है। We honor the pioneers of our maritime history, Cholas, Kalingas, Punjabis, Marathas and many more. Together, they bridged continents carrying our culture and commerce across the seas and fortified our shores against the tides of invasion. शक्ति के